Jai Gopi Jana Vallabha Yashodanandana Brajadana Yashodanandana Jamuna Tera Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Hare Rama, 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 Rama.
Gaura Premanande. Jayam Vishnupada Paramahamsa Pri Vrajagacharya Stotra Sata Sri Samad His Divine Grace Tirabai Charan Arvind Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada Ram Koki Vaishnava Ki Iskandi DT Founder Acharya His Divine Grace Sri Prabhupada Ki Acharya Sri Haridas Thakur Ki Samavata Bhakti Vrinda Ki Haridam Sankirtan Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaura Premanande, all the assembled devotees, all that is, to Sri Guru, to Sri Gauranga, all that is, to Sri Prabhupada. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Taksurandilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Sri Rupam Sagratam Sahagana Raghunatam Vitam Sadivam Sadvaitam Savadvitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanvitam Sha Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Isha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhani Vansa Kalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Narayanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraya. Let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayan Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayasha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhakti Bhaviti. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed. Who is praised with transcendental songs becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamhitam Uttamasloka Charitam Sasaya Lokasya Dhanyam Swasya Namaha. The Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, creation of God, Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all. Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Siva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Devaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Nakalantam Nangayate Girim Yatkripatamaham Bande Sri Gurum Dinataranam Yatkripatamaham Bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, only one book. 19. Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter 2, entitled Divinity and Divine Service, text number 19. Tada, tada, rajas, tamo, bhava, kamam, lobha, lobhadayas, chaye, cheta, etair, anabhidham, stitam, sattve, prasidati. Translation, at least one time can repeat. Tada rajastamo bhava kamalobhadayaschaye chita etairana vidham stitam sattve prasidati. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Sri Prabhupada Ki. As soon as irrevocable loving service is established in the heart, modes of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, काम, इच्छा और तृष्णा, ये तीनों चीजें जो हैं disappear from the heart. हृदय से गायब हो जाती हैं. Then the devotee is established in goodness, तब भक्त जो है वो सत्वगुण में स्थापित होता है and he becomes completely happy. और पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है. So this is a verse on how to become completely happy. ये श्लोक है पूर्ण रूप से हम सुखी कैसे होंगे इसके लिए. Who wants to become completely happy? कितने लोग पूर्ण रूप से सुखी होना चाहते हैं. So we have to listen carefully to this. A living being in his normal constitutional position is fully satisfied in spiritual bliss. व्यक्ति जो है अपनी आध्यात्मिक स्थिति में एकदम आनंद में स्थित होता है. This state of existence is called Brahmabhuta or Atmanandi, ब्रह्मभूत या आत्म आनंद भी कहा जाता है, or the state of self-realization. ये इसको आत्म साक्षात्कार का स्तर भी कहा जाता Oh, I'm sorry. The state of self-satisfaction. है या आत्म संतुष्टि का स्तर भी कहा जाता है. This self-satisfaction is not like the satisfaction of the inactive fool. ये वो संतुष्टि नहीं है जो निष्क्रिय मूर्खों की होती है. The inactive fool is also quite satisfied. कभी कभी मूर्ख लोग बहुत संतुष्ट दिखते हैं. They say ignorance is bliss. कहते हैं कि अज्ञान ही आनंद है, नहीं जानो और आनंद में. The inactive fool is in the state of foolish ignorance. जो निष्क्रिय मूर्ख है वो अज्ञान में जी रहा है. Whereas the self-satisfied Atmanandi is transcendental to the material state of existence.
वहीं पे आत्मानंदी व्यक्ति जो है इस भौतिक जगत से परे जो जीता है उसका अनुभव करता This stage of perfection is attained as soon as one is fixed in irrevocable devotional service. है। ये परम स्थिति तब स्थापित मिलती है जब व्यक्ति भक्ति में सुदृढ़ रूप से लगा रहता है। Devotional service is not inactivity, but the unalloyed activity of the soul. भक्ति जो है वो आराम करने की अवस्था नहीं है, बल्कि भक्ति जो है पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से भगवान की सेवा में लगने की अवस्था है। The soul's activity becomes adulterated in contact with matter. आत्मा की गतिविधियां जो हैं वो मिश्रित गंदे हो जाते हैं, वो भौतिकता के संपर्क में आते हैं। And as such, the diseased activities are expressed in the form of lust, desire, hankering. और इस तरह से जो संक्रमित अवस्था है उसमें काम, इच्छा, ये सब तृष्णा, ये सब इन चीजों का जो है प्रादुर्भाव देखा जाता है। And three more expression of this disease activity is inactivity, foolishness, and sleep. उसमें से मूर्खता और नींद, ये तीन जो है इसी का से आती है। Yes. Those who like to sleep during Mangalarati fall in this category. जो सुबह मंगल आरती में सोते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, मूर्ख की कैटेगरी में। The effect of devotional service becomes manifest by complete elimination of these effects of passion and ignorance. और भक्ति का जो इफेक्ट है पूरे रजोगुण और तमोगुण को पूरा नाश होगा तो दिखेगा। The devotee is fixed at once in the mode of goodness. भक्त जो है तुरंत ही सतोगुण में स्थित हो जाता है। And he makes further progress to rise to the position of Vasudeva, or उससे भी उठ के वो वसुदेव के स्तर तक, शुद्ध सत्वगुण के स्तर तक पहुंचता है, or the state of unmixed sattva or Shuddha sattva. जिसको शुद्ध सत्व कहते हैं या बिना रजोगुण तमोगुण मिला हुआ सत्वगुण होता है, पहुंचता है। Only in this Shuddha sattva state can one always see Krishna eye to eye. आंखों से कृष्ण देखना है तो शुद्ध सत्व स्तर पे आना पड़ता है। By dint of pure affection for the Lord. भगवान से शुद्ध स्नेह की अवस्था जब प्राप्त कर लेता है तब भगवान को आंखों से आमने सामने देख पाता है। Sneha, affection. Sneha, yeah. A devotee is always in the mode of unalloyed goodness. भक्त जो है हमेशा जो है शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाता है। Therefore, he harms no one. इसलिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। But the non-devotee, however educated he may be, लेकिन हर भक्त चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, is always harmful. वो हमेशा नुकसानप्रद है दूसरों के लिए, कुछ न कुछ नुकसान करेगा। A devotee is neither foolish nor passionate. न भक्त न तो मूर्ख होता है न तो रजोगुणी होता है। The harmful, foolish, and passionate cannot be devotees of the Lord. मूर्ख जो कि राजसिक गुणों से है आवृत है, वो व्यक्ति कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। However, they may advertise themselves as devotees by outward dress. और ऊपर कपड़ा भी कोई भक्त का पहन ले लेकिन वो भक्त नहीं है। ऊपर से कोई दिखा ले कि हम भक्त हैं लेकिन वो भक्त नहीं है। Devotee, the dress does not make one a devotee. इसका मतलब कपड़ा आपको भक्त नहीं बनाता। A danda does not make one a sannyasi. एक डंडा जो है व्यक्ति को सन्यासी नहीं बनाता। A devotee is always qualified with all the good qualities of God. भक्त जो है वो भगवान के अच्छे गुणों से हमेशा प्रस्तुत रहता है।
Quantitatively, such qualifications may be different, but qualitatively, both the Lord and his devotee are one and the same. हाँ, मात्रा में भगवान और भक्त के गुण कम अधिक होंगे, लेकिन गुण के रूप में दोनों भी गुण एक ही होते हैं. This last point is nicely explained by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Dasamula Tattva. भक्तिविनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखा है 10 मूल तत्व, उसमें इस विषय पर ज़्यादा प्रकाश डाला है. In that Dasamula Tattva, Srila Bhaktivinoda Thakur explains the 4 tattvas of the jiva, the living entity. उन्होंने जीव के बारे में 4 तत्वों का वर्णन किया है. The first tattva of the jiva is that he is angsha, part and parcel of Krishna. तत्व है जीव का कि वो भगवान का अंश है. Amaya vangsho jiva loke jiva bhuta sanatana, eternally part and parcel. हमेशा सनातन रूप से भगवान का, Never to become the whole, never to become जो Krishna. एक भगवान से एक नहीं होता, अलग अंश ही रहता है. Second tattva of the jiva is that he is in his original constitutional position, nitya mukta, eternally liberated. Nitya mukta, living entities in Vaikuntha, they are nitya mukta. वो अपने शाश्वत स्थिति में हमेशा नित्य मुक्त होता है. And who unfortunately have come in this material world, they are classified as nitya baddha. और जो जीव इस दुनिया में आ गए हैं उनका नाम है नित्य पद. And the fourth characteristic or tattva is mentioned here, Veda Aveda. चौथा तत्व बताया गया भेद अभेद. Qualitatively the same as Krishna. Qualitatively eternal spirit soul, but quantitatively we are small. Krishna is big. गुणात्मक रूप से जीव भगवान का एकदम समान रूप से है, लेकिन परिणात्मक रूप से परिमाण मतलब क्वांटिटी के रूप से भगवान और जीव में बहुत फर्क है. So this is a very important verse describing that as long as the living entity keeps connection with especially the mode of passion and the mode of ignorance, then he cannot be happy. जब तक जीव रजोगुण और तमोगुण से संबंध बनाए रखता है तब तक वो सुखी बन ही नहीं सकता. To be happy, to begin experiencing happiness, one must come to the level of sattva guna, mode of goodness. सुख का अनुभव करने के लिए सत्वगुण तक आना पड़ेगा. And of course, in the purport, Prabhupada explains that mode of goodness, material mode of goodness, is often tinged with passion and ignorance. भौतिक जो सत्वगुण है उसमें भी हमेशा पाया जाता है कि उसमें भी रजोगुण तमोगुण मिल के ही मिलता है. शुद्ध सत्वगुण इस दुनिया में नहीं मिलता. Yeah. So that means that actually even the mode of goodness is not completely secure. One has to rise above that mode of goodness to come to the pure goodness. Yeah. So सत्वगुण में भी आदमी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, उसको ऊपर उठ के शुद्ध सत्वगुण तक आना पड़ेगा. So in the Bhagavad Gita, Krishna nicely explains how if one is fortunate to receive this transcendental knowledge means of bhakti, devotional service, then susukam kartamavyayam, he becomes happy. भगवान कृष्ण कहते हैं कि गीता में कि अगर किसी को ये दिव्य ज्ञान मिल जाए, ये जो तो वो जो है वो एकदम सुखी बन जाता है. सुसुखम कर्तुमव्ययम्, वो एकदम बहुत ही सुखी हो जाता है. Raja vidya raja goyam pavitram idam utamam pradakshamas kamam dharmyam susukam karvamavyam. The whole Vedic culture is facilitating, helping individuals and society in general to rise, to come to that position of happiness, transcendental happiness. पूरा वैदिक सभ्यता जो है व्यक्ति को कैसे उस
सुख की अवस्था तक ले जाए, इसके लिए लगा हुआ रहता है, इसी के लिए दिया हुआ है। Prabhupada, Srila Prabhupada one time explained, the sign of a real devotee is that he is happy. प्रभुपाद ने एक बार कहा है कि अच्छे भक्त का पहचान है, सच्चे भक्त का पहचान है कि वो हैप्पी, सुखी होगा। There cannot be such a thing as unhappy devotee. वो दुखी भक्त ऐसा करके कोई चीज नहीं रहता। Yes. Becoming devotee means to become situated on the भक्त बनने का मतलब है कि सुखी भक्त transcendental platform. दिव्य अवस्था में स्थित है। By nature, by definition, transcendental platform means yeah, ananda. और दिव्य अवस्था की पहचान है, उसका स्वभाव है कि वहाँ पे आनंद होता है। Yes. So we can see actually in many photos of devotees, especially when they were associating with Prabhupada, meeting him at the airport, they were like ecstatically happy. देखते हैं पुराने फोटो में जब प्रभुपाद के साथ विशेष तौर से भक्तों का फोटो है कहीं पे, तो बहुत ही खुश दिखते हैं सब। So this will further be explained actually in the next, I think, next verse of one of the verses coming up, how when one becomes fixed, one has to become fixed up in the mode of goodness, then automatically mind will become happy, satisfied. व्यक्ति को सत्वगुण में आके स्थित होना चाहिए, तो मन अपने आप ही जो है हैप्पी और सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाएगा। Yes. Prabhupada also explained that I have come to America to change the hippies into happies, isn't it? प्रभुपाद ये भी कहते हैं मैं अमेरिका आया हिपीज को हैप्पीज बनाने के लिए, नालायकों को सुखी बनाने के लिए। Yes. So no one can actually become fully happy unless one again regains one's original constitutional position. जब तक व्यक्ति को अपनी शाश्वत स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। That means that all the world is due to our being disconnected with our spirit self. इसका मतलब दुनिया में जितने दुख हैं उसका एक ही कारण है, हम अपनी आत्मा से ही कट गए। Yes. And also Prabhupada gave a very simple definition or explanation what does it mean? What is the meaning of being situated in the mode of goodness? प्रभुपाद ये सिखाते हैं कि सत्वगुण में कोई स्थित है, उसका क्या मतलब है, उसका कैसे पता चलता है कि कोई सत्वगुण में स्थित है। To be situated, firmly situated in the mode of goodness, Prabhupada explained, means to follow very strictly these 4 rules and regulations. 4 नियम हैं, उसको बहुत ही कड़ाई से पालन करना सत्वगुण का पहचान है। By following these 4 rules and regulations are directly connected with the needed qualities, 4 qualities, for the first 30 qualities mentioned by Narada Muni. जैसे ही हम ये 4 नियम पालन करते हैं, तो नारद मुनि ने जो 30 गुण बताए हैं, उसमें से पहले जो 4 गुण हैं वो होने लगते हैं। When Srila Narada Muni met with Yudhishthira Maharaj, नारद मुनि जब युधिष्ठिर महाराज को मिले थे, Yudhishthira Maharaj was very happy to receive a sadhu in his residence, युधिष्ठिर महाराज खुश थे कि कोई साधु आया उनके घर, especially a sadhu in the caliber of Narada Muni. नारद मुनि के जैसा था। He requested, my dear Narada, you have come to my home. I am so fortunate. I am just a fallen householder. आप हमारे घर आए, ये हमारी बड़ी किस्मत है। Please explain to me the nature of dharma. What is dharma? आप हमको धर्म का स्वभाव बताइए कि धर्म कैसा होता है। And Narada Muni in the very beginning gives a list of 30 qualities needed for one to actually become a human being, to be recognized as a human being. वो 30 गुणों को बताते हैं कि 30 गुण जो है ये आदमी बनाने के लिए। So 30 is
quite a large number, but at least the first four we should be able to remember. पहला चार तो याद होना चाहिए. Yes. And if we know these four qualities, if we develop these four qualities, then automatically we will become happy. और अगर हम चार गुण जानेंगे तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे. So उसका बेसिक है क्लास yeah, these four qualities will bring us to this mode of goodness that is ये चार चीजें हमें सतोगुण उठा के ले आएंगे. what are those four qualities that we ये should चार गुण develop? कौन कौन से हैं कौन बताएंगे? बोलो. Mention one. 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 Yeah. हाँ, जैसे What is- नो स्मोकिंग. No. I'm not asking what are the four rules and ये regulations. रूल नहीं बताया. चार Not, चार जो क्वालिटीज. yeah. There's yeah. सत्यम, Char niyam is this. Yeah. दया, Satyam, daya, tapa, socham. Yeah. Satyam. Truthfulness. Truthfulness means being honest as to what is our real nature. सत्य का मतलब अपने आप से सच करो पहले तो. We are मैं कौन हूँ? we are otherwise cheating ourselves by accepting this material body as the true self. अपने को शरीर मानना ये अपने आप को ही ठगना है. इसलिए अपने को ठगना बंद करो. Yeah. And we are cheating others also. दूसरों को भी ठग रहे हैं. Yeah. Not only that, Prabhupada explains that we are committing violence upon others. दूसरों को भी हम वायलेंस, Yeah. हिंसा कर रहे हैं दूसरे के ऊपर. Prabhupada in the purport here mentioned a devotee is one who is not harmful to others. प्रभुपाद देखते हैं कि भक्त को दूसरे का विनाशकारी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए. What does it mean to be harmful? हार्मफुल का मतलब है Just to punch somebody in the mouth is harmful. किसी का चेहरा पेंट करना हार्मफुल है. That is one level of harmful, हो सकता है वो. of harm. But actually, Srila Prabhupada gave us the deep, full meaning of what it means to be harmful, Not preaching Krishna consciousness. what it means to be violent. Yeah, Not preaching Krishna consciousness to others. correct. Not to give each and every living entity conditioned in this material world an opportunity to become self-realized. दूसरों को कृष्ण भक्ति आत्म साक्षात्कार का संधि नहीं प्रदान करना, मौका नहीं प्रदान करना ही वायलेंस है, हिंसा है. Yes, we are inhibiting, we are preventing दूसरों को कृष्ण से जोड़ने से रोक देना, ये हिंसा है. conditioned living entities to actually become awakened to their real identity. जीव को उनके वास्तविक स्वरूप तक उठने में अगर कोई रोक रहा है तो वही हिंसा है. Means we are actually directly contributing to people's continued suffering in the material world. मतलब आप सीधा सीधा उनको भौतिक जगत में दुख भोगने के लिए छोड़ रहे हो तो हिंसा ही हो. In Sanskrit, that is referred to as Atmahana, killer of the soul. संस्कृत में आत्महनन कहा जाता है, मतलब आत्मा का हनन करने वाला, आत्मा को मारने वाला. The whole modern educational system can be described. Prabhupada referred to the modern educational system as सोल किलिंग कल्चर, killer of the soul. किलर ऑफ द सोल. प्रभुपाद ने कहा कि ये जो आधुनिक शिक्षण संस्था सब है ये आत्मा का गला घोटने वाला, आत्मा को मारने वाला कल्चर है. No preaching, no discussion of Bhagavad Gita in school, not allowed. भगवद गीता का कोई प्रचार नहीं, कोई उसका चर्चा नहीं स्कूलों में. That is the maniac. यही आसुरिक है, असुरों का काम है. That is keeping people in ignorance. उसी से लोग अज्ञान में हैं. That is actually inflicting continuous suffering. उसी से लोगों को हमेशा जो है दुख हो रहा है. Because ignorance actually means suffering. अज्ञान का मतलब दुख है, इसमें कोई मतलब दो मत नहीं. Therefore, we attend Bhagavatam class, we engage in spiritual activities to alleviate or to take away the ignorance, to remove the ignorance. जब भागवतम कक्षा में हम बैठते हैं तो हम अपने अज्ञान को हटा के निकल जाते हैं. So that is actually real preaching. Prabhupada was
very ये असली प्रचार है। strong on this point. बहुत strong। Most important, best welfare activity, isn't it? Yeah. The best welfare activity that we can perform is to give knowledge to the living entity so he can come out of his tamagun condition. Yeah. तो इस सबसे बड़ा जो वेलफेयर एक्टिविटी मतलब समाज सेवा ये हो सकता है कि सबको ये ज्ञान दिया जाए, भगवत का जो ज्ञान है सबको दिया जाए, सबसे बड़ा समाज सेवा होगा। Yeah, that was explained by Lord Chaitanya. ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। What is that verse? भूरी दर्जना। Brahmanda, no, that those who are born in the land of India. Bharata Bhumi te hoile. मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। Yeah, upakar, para upakar. गोपियों को से भूरी दर्जना। Yeah, yeah. भूरी गिरना नहीं भूरी दर्जना। So that is the business of devotees. यही भक्तों का काम है। Yeah, bring people out of their state of ignorance to proper knowledge. लोगों के अज्ञान जड़ता से निकाल के सच्चे ज्ञान तक उनको खींच के लेकर। Yeah, so this verse is very important. I'd like to add some comments on that. किसी का कोई टीका है, कोई जोड़ना चाहता है कुछ? Any questions? कोई प्रश्न पूछना चाहता है? Yes. To be in a place is a natural state of the soul, living entity. To be in this is natural state of living entity. The suffering is not a constitutional quality of the soul. Suffering is not a constitutional quality of the soul. So far, so good. Yes. So then, how soul experiences suffering in this world? How the soul experiences suffering in this world? How the soul experiences suffering. आत्मा जो है भगवान का अंश है, तो खुशी रहना चाहिए। उसमें तो दुख वाला कोई चीज है नहीं, तो दुख होता कैसे? The soul by nature does not suffer. आत्मा को कभी दुख नहीं। But when the soul comes in contact with the material energy, when the living entity becomes covered by these modes of material nature, he cannot express his natural condition of happiness. जब आत्मा इधर आ जाता है तो उसका जो स्वाभाविक स्थिति है उसको प्रकट नहीं कर सकता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर, अनुभव नहीं कर सकता। And therefore, by ahankara, by false identification, we are experiencing this suffering. But the soul by nature is not is not suffering, because the soul is like encaged or imprisoned, not able to express himself. Therefore, it's like unconscious. The soul is in unconscious state. That's this pain type. Krishna, when he comes in the material world, different from us, he doesn't come in contact. He's not. जो है आत्मा जो है अणु है, इसलिए हम भौतिक गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं। Yeah. So that is the position. The jiva in the material world. The jiva has that choice of either taking shelter of the internal energy or the external energy. इनका हमेशा चुनाव होता है, या आध्यात्मिक प्रकृति या तो बाह्य प्रकृति में किसी एक जगह रह सकता है। Yeah. So it means that by nature, the spirit soul, by nature, by definition, is meant to be fully happy and blissful. आत्मा जो है स्वभाव से ही पूर्ण रूप से आनंद में रहना चाहता रहेगा। Yeah.
sun has risen. You have to go for Harinam Sankirtan. जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंदे जय